हाँ, so here we are supposed to see the bipolar junction transistor. In previous session already we have seen there are the two types of the BJT. These are nothing but NPN and the PNP. If we are connecting P type of semiconductor in between two N type of semiconductor, it means हम क्या कर रहे हैं, दो N टाइप ले रहे हैं और उसके बीच में हम एक P टाइप को ले रहे हैं. That time we can say that as a NPN transistor. And if you see, जो बीच का होता है that will be the thinner as compared to the remaining two. And for the PNP exactly vice versa. जहाँ पे P था वहाँ पे N रहेगा. It means if we are sandwiching one N type semiconductor in between two P type, you will get as a PNP semiconductor. You can see here the NPN and the PNP. Middle वाला जो है this is thinner as compared to the remaining two semiconductors. Here we can say transistor will exactly give us two back-to-back diode connection. So you can see BJT will consist of three terminals. These are nothing but emitter, base, collector. Which will be the emitter and which will be the collector? For the construction diagram, you can take any as emitter and any as the collector. But always the middle one you will take as a base. But if you are going for the symbol where you will get the notch, or if you are drawing the symbol, practical की जगह तुम उसको draw कर रहे हो, तो at that time you will say here emitter which will have the outward side arrow. उसको outward side arrow है, that you can say as a emitter. After that you can see here the short description of all these three terminals. What we are saying, emitter which will have the outside arrow, and always that can be NPN or the PNP. Emitter always will get forward bias with respect to the base. So for NPN, emitter is giving us holes to its junction, but for the PNP, emitter is giving us इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स जंक्शन. क्यों? क्योंकि ये देखो तुम यहाँ पे इफ वी आर सेइंग NP एज अ फॉरवर्ड बायस, मतलब ये इमिटर डायोड, तो हमें क्या करना है, N को निगेटिव टर्मिनल देना है, P को पॉजिटिव. तो हमारे पास जो P है उसमें क्या है, होल ज़्यादा. सो दैट्स वाई इट इज़ गिविंग अस होल्स टू इट्स जंक्शन. बट इफ़ यू विल गो फॉर PNP, हम P को पॉजिटिव देंगे, N को निगेटिव. एट दैट टाइम दिस PN इमिटर डायोड विल वर्क एज अ फॉरवर्ड बायस, एंड एट दैट टाइम N में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन. सो इट कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स junction. After that we can see the third terminal of a BJT, that is a collector, the section which is collecting the carrier. Emitter is emitting the carrier, collector is collecting the carrier. That terminal we are saying as a collector, and always you will require collector that will be the reverse bias with respect to the base. So for NPN transistor, collector receives the holes to its junction, and for PNP transistor collector receives electron, because यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कर रहा है, NPN को emitter दे क्या रहा है, holes, that's why it will receive holes. और for PNP emitter क्या कर रहा था, emitter is giving electron, supplying electron, so that's why for PNP collector will receive electrons to its junction. And the base, which is the middle terminal, which is the middle terminal in between emitter and base, that we are saying as a base terminal of bipolar junction transistor. So we can say here transistor BJT which will consist of three terminal, emitter which will emit the carrier, collector which will collect the carrier, and the base which is nothing but the middle one, which will be the thinner as compared to the remaining two regions. These are nothing but collector and the emitter. After that we are saying emitter you will require always forward bias. So we can say emitter is heavily doped, so it can give large amount of carrier into the base. But क्या होता है, base में some
they will do the recombination of electron and holes, and some carrier will go to the collector. That's why collector is moderately doped, and base is already thinner, base is lightly doped, so it can pass. वहाँ ऑलरेडी वो थिन है तो वो बहुत कम लेगा, एंड इट कैन पास मोस्ट ऑफ कैरियर टू द कलेक्टर. यू कैन सी हियर द डायग्राम यू विल गेट हियर. whenever we are making emitter diode as forward bias, at that time it is emitting, but when it is emitting the carrier, these are going towards the base, but base is thinner, so it can take only some carrier. There will be the recombination of electron and holes, and they will constitute base current, but remaining carrier will go to the collector. They will constitute IC current. So you will get IE equal to IB plus IC. So you can see here, base is lightly doped, collector is moderately doped. The junction between the emitter and base we can say as emitter diode, or we can say emitter base diode. And the junction which is between the collector and base, we can see that will always reverse bias, which we are saying as a collector diode. So we can say emitter diode will always forward and collector diode will always reverse biased. So ये फॉरवर्ड बायस है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे रहेगा, कम, और ये रिवर्स बायस है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे रहेगा, हाई. रेजिस्टेंस ऑफ इमिटर डायोड इज स्मॉल, resistance of collector diode is high. So you can see here the working already, these things we have discussed yesterday. Forward biasing means what? P को हमें पॉजिटिव देना है, N को निगेटिव. So we are having the NPN transistor, first semiconductor is N, after that P, and after that N. So if we are supposed to make this NPN transistor as a switch or as an amplifier, and if we are giving the power supply, at that time if we are giving the power supply in that way, first NP diode will become forward biased, that we are saying as an emitter diode, and the second PN diode which is nothing but we are saying collector diode, which will become a reverse bias. तो हमने कल क्या देखा है, if it is in forward bias we are using that as a switch, हमने डायोड में पढ़ चुके हैं, and if diode is reverse bias we can work that as a off switch, turn off, मतलब switch जो है बंद है. So you can see here, whenever we are giving emitter based diode as positive supply and it is becoming forward bias, some carrier will enter into the base and they will constitute base current, but some will enter into the collector region, they will constitute collector current. So you will get IE equal to IB plus IC, that is nothing but collector current. वर्किंग सेम है, वही है, यहाँ पे भी वैसे ही प्रोसीजर हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, जहाँ पे ये जो बैटरी के कनेक्शंस थे वहाँ पे जो थे एग्जैक्टली वाइस वर्सा, बिकॉज यहाँ पे जहाँ N है यहाँ पे P है, और जहाँ P था वहाँ पे N है. So if we are supposed to make first PN diode as a forward bias, that is nothing but emitter based diode, at that time we will give positive supply to the P, negative supply to the N type semiconductor. We are supposed to make collector diode as reverse bias, so we are connecting negative to the P terminal, positive to the base. So here whenever we are making emitter diode as a forward bias and collector diode as reverse bias, at that time also you will get the emitter current, but this current is because of holes. वो जो करंट था that was because of electron, but this current is because of holes which are moving towards the base, क्योंकि P में हमारे पास ज़्यादा क्या है, होल्स है. So this will move towards the N type semiconductor. Some will constitute base current and remaining will go to the collector, that will constitute collector current. So you will get IE equal to IB plus IC. So you can see here I have explained the working of PNP.
In short, you can see the symbol for the transistor and its working. If anyone is having any query, you guys can ask me. Otherwise, we can see our next syllabus. So we can see here, when transistor will work as diode and when ट्रांजिस्टर विल वर्क एज एम्पलीफायर। डायोड मतलब क्या होता है? स्विच, क्योंकि डायोड का मेन एप्लीकेशन ही स्विच है। सो इफ both junctions are reverse bias at that time, we can use BJT as off switch. And if both junction, which one? Emitter base and the base collector, both junction are forward bias, at that time you can use that transistor as a closed switch or you can say on switch. But if जो हमारा प्रॉपर वर्किंग है, हम इमीटर बेस को जब फॉरवर्ड बायस बना रहे हैं तब बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होता है। जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमने अभी ये जो डायग्राम्स देखे हैं, दीज आर नथिंग बट दे विल गिव द यूज ऑफ बीजेटी एज अ एम्पलीफायर। यहाँ से हमको बीजेटी एज एम्पलीफायर मिलेगा। वाई? बिकॉज हियर बेस इमीटर जंक्शन इज बिकमिंग forward bias, so emitter diode will become forward bias and base collector junction will become reverse bias. So you can see here we can give connections to the transistor in three ways. That can be common base, common emitter or the common collector. You can see here the diagram. What we are saying? Common base. First diagram is for NPN and second is for the PNP configuration. सेम डायग्राम है, डिफरेंस क्या है? PNP NPN की जगह है तो इमीटर जो है PNP का इनवर्ट रहेगा, NPN का आउटवर्ड। और बैटरी जो है सेम है, ओनली जहाँ पे निगेटिव था वो साइड पॉजिटिव बन गया है और जहाँ पे पॉजिटिव था वो साइड निगेटिव बन गया है। ये बैटरी के कनेक्शंस चेंज करने हैं। सो वी कैन से हियर दिस इज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इफ़ यू सी, हमने जो पढ़ा है, हम पहले जो PPTs में देखा है हमने ट्रांजिस्टर का वर्किंग, NPN और PNP, these are exactly same as a common base configuration, because here we are making base common to the input as well as we are making base common to the output, because this side कलेक्टर के साइड हम आउटपुट देखते हैं, इमीटर के साइड हम इनपुट देखते हैं, इनपुट देते हैं। So here if we are making the transistor connection as a common base connection, you will get there one definition, that is nothing but the common current amplification factor. This we are denoting by letter alpha, and alpha is nothing but it is the ratio of change in output current with respect to change in input current. आउटपुट करंट हमारे पास क्या है? यहाँ पे आउटपुट कौन सा करंट है? IC, और इनपुट करंट क्या था हमारे पास? IE. दैट्स वाई यू कैन राइट अल्फा इक्वल टू, यू कैन राइट ट्रायंगल IC अपॉन ट्रायंगल IE, और यू कैन राइट वहाँ पे D इज नथिंग बट डेल. दिस सिंबल इज ऑल्सो वी आर सेइंग एज अ डेल. चेंज इन आउटपुट कलेक्टर करंट with respect to change in emitter input current, that is nothing but IE. From this PPT you will get some MCQs in the exam. यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन आ सकता है, ये डेफिनेशन और ये अल्फा के वैल्यू. सो यू शुड नो द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन 1, लेस देन यूनिटी, बट इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 0.9 से ज़्यादा है और 1 से कम है. सो इट विल बी इन बिटवीन 0.9 to 0.999 like that. Approximately it will be 1, but if you see practically that value will be the less than 1. So this is nothing but the alpha. अल्फ़ा कब मिलेगा हमें? जब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. अल्फ़ा मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट current, that is nothing but IE. But at that time we are putting output voltage VCB as a constant. हम जो voltage है सिर्फ कहाँ देंगे? यहाँ input पे, but ये जो voltage है we will keep that as a constant. Now we can see about how you will get its equation. You can see here
टोटल इमिटर करंट डज नॉट रीच द कलेक्टर टर्मिनल। वाई? क्योंकि क्या हो रहा है, सम जो इमिटर जो पार्ट है उसमें के जो होल्स है, इफ इट इज NPN, वहाँ पे मेजोरिटी N में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, P में जाएंगे, some will constitute their base current and some electron will go to the collector region. So that's why total emitter current is not reaching towards the collector. Some will go to the base and some will go to the collector. That's why you will get IE equal to IC plus IB. But as we are saying, collector diode is reverse bias. There will be very few minority charge carrier. So there you will get some constitute leakage current. Leakage मतलब क्या? If you are not making proper connections, if there is some error, at that time also there will be the some current flow. That current we are saying as a leakage current. तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे, ये जो VCB वोल्टेज है we will put constant, but हमें पता है यदि ये NPN है तो यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा सा बैरियर पोटेंशियल क्रिएट करेगा. दैट बैरियर वोल्टेज वी आर सेइंग एज अ leakage voltage, due to which you will get some leakage current, that is nothing but ICBO, that is the leakage current. So the collector current constitute the portion of alpha into IE, and leakage current you will get that ICBO. So you can take actually जो collector current है वो क्या है, if you see here from this diagram you are getting first जो equation है, फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, ये जो डायग्राम से मिल रहा है, वी आर गेटिंग IE इक्वल टू IB प्लस IC. बट व्हाट वी आर सेइंग, जब हम वहाँ पे VCB कांस्टेंट रख रहे हैं एंड कलेक्टर डायोड जब रिवर्स बायस बन रहा है, एट दैट टाइम ऑल्सो देयर यू विल गेट सम अनवांटेड करंट, दैट इज नथिंग बट द लीकेज करंट, दैट वी आर टेकिंग एज अ ICBO. But if we are getting that current, you will get the collector current equation as alpha into IE, because if you see we can write here IC as ICBO. but हमने अभी अल्फा का इक्वेशन देखा है, अल्फा का इक्वेशन हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन इमिटर करंट. सो यू कैन पुट हियर डायरेक्टली हम क्या कर रहे थे, यू आर पुटिंग alpha equal to IC by IE, but we are saying collector current you will get because of emitter current as well as because of leakage current. That's why we can write IC equal to alpha into IE plus ICBO. If anyone is not getting this point, you can ask me. थोड़ा complicated है, नहीं समझ पा रहे हो तो you can ask me, I will explain again. Can you repeat this point? Okay, see here Aditya, what we are saying, हमें ये सब छोड़ ही दो, सीधा we will see the diagram. ये भी नहीं, हम फर्स्ट डायग्राम देखेंगे बड़ा वाला. हाँ, see here what we are saying, when we want to make this NPN as amplifier, हमें क्या करना है, इमिटर डायोड जो होता है we are supposed to make forward bias, and ये जो है collector diode we are supposed to make reverse bias. That's why we are giving the connection like this. So whenever we are making emitter diode as a forward bias, we are getting emitter current, but at that time some electron are entering into the p type, but there is very few holes, so they will recombine with this electron and remaining electron will enter into this n region and they will constitute collector current. So that's why तुम्हें इक्वेशन क्या मिल रहा है, IE equal to IB plus IC. But after that we are saying this circuit as a common base configuration. Why? Because here base is common. Please, I am saying to all students, please concentrate, because here we are supposed to see common base, common emitter, common collector. All these things are exactly same. तो हम common base thoroughly देखेंगे, common collector, common emitter, only we will see the diagram and only we will see the equations. So ये अच्छी से समझ के ले लो तो तुमको उसका वर्किंग समझ आ जाएगा.
हाँ, तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी मिल रहा है, बट base is common in between input and output. That's why we are saying this circuit as a common base configuration. Or common base configuration, at that time you will get their current amplification factor. Current amplification factor if you see, तुमने कहीं पे सुना होगा, गेन मतलब क्या होता है, गेन मतलब क्या, हम कोई मोबाइल ले रहे हैं, वो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा दे रहा है, फोटोज़ अच्छा बहुत खींच रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यस इट इज़ इफेक्टिव, इट इज़ मतलब वर्थ है, जितना हम पे किए हैं उसके हमें मिल रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है. लाइक दैट गेन मतलब क्या होता है, वॉट एवर इनपुट यू आर प्रोवाइडिंग यू विल गेट द वर्थ आउटपुट फ्रॉम दैट सर्किट. तो हमको कैसे समझेगा, यू विल कंपेयर आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट, एट दैट टाइम यू विल गेट द गेन. तो हम यहाँ पे कौन सा गेन बोल रहे हैं, करंट गेन, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. In short, you can say that as a current gain. Sometime they will ask the question, this is the current gain in the common base configuration. They will give blank space. They will give the option alpha, beta, gamma. You should know current gain is nothing but it is the common current amplification factor. That is nothing but alpha. क्या आता है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में, अल्फा. तो अल्फा मीन्स व्हाट, यहाँ पे आउटपुट करंट क्या है, आई सी, इनपुट करंट क्या है, आई ई. सो यू कैन राइट अल्फा इक्वल टू आई सी बाय आई ई. तो हम आई सी हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट आई सी इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई, लिख सकते हैं हम आदित्य, कैन वी राइट. हाँ, हमें आया था अल्फा इक्वल टू आई सी बाय आई ई. आई एम रीअरेंजिंग इक्वेशन, आई कैन राइट आई सी इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई. बट what I am saying, when we will require current amplification factor, at that time we are supposed to put VCB as a constant. So if we are not putting any value to that VCB, we are not changing that value, we are keeping that as a constant, at that time we know ये जो है this collector diode will become a reverse bias. But यहाँ पे P है, यहाँ पे N है, तो दे विल फॉर्म बैरियर पोटेंशियल. जब हमने डिप्लीशन रीजन पढ़ा है तब हमने पढ़ा है कि वहाँ पे बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है, ड्यू टू विच देयर यू विल गेट द सम लीकेज करंट दैट वी आर टेकिंग एज अ कलेक्टर बेस लीकेज करंट. एक्चुअली जो लीकेज करंट होता है ना, वी आर डिनोटिंग बाय लेटर जीरो. ये जो जीरो है, जीरो, और यू कैन से ओ. इफ यू सी इन सम टेक्स्ट बुक यू विल गेट ओ, and some at some places they are writing as a zero, क्योंकि both are giving the circle like structure, that's why they are taking. but हमें जो लीकेज करंट है वो कहाँ मिल रहा है, कलेक्टर और बेस में, दैट्स वाई दे आर टेकिंग आई सी बी ओ. तो हमें आई सी इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई मिलना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द लीकेज करंट वी आर राइटिंग आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, बिकॉज दिस इज द लीकेज करंट. समझ में आया आदित्य? आदित्य, मैम मैंने पूछा था ओमकार. ओके ओमकार, समझ में आया? Okay, to remaining student, you got this point, how we are getting, because sometime they can ask the question as a numerical also. They will give some value, they will not give one value. They will ask, you are supposed to derive that value. So you should know the equation for that. जैसे हमने हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर, उसकी इफिशियंसी, उस पर मैंने जो न्यूमेरिकल्स दिए थे टेस्ट में, लाइक दैट दे कैन आस्क ऑन दिस also. So I have given in the short the expression of the collector current. If you are getting this, go through that. If you are not getting, directly you can see this equation, IC equal to alpha IE plus IC BO, because from these two equations they are writing all these things. If you are good in mathematics, you can try on the notebook, you will get the same equation like that. Because हम क्या लिख रहे हैं, IC equal to alpha IE plus ICBO, but IE की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, IC plus IB, क्योंकि we have seen that जब हम IC plus IB लिख दे रहे हैं यहाँ पे, at that time if you are rearranging this equation you will get this,
And again, if you want the value for IC, you can put that 1 minus alpha to the RHS. So you will get this equation. दिस इज द सेम इक्वेशन लाइक दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है वही फिर से लिखा है, ओनली इंस्टेड ऑफ दिस आई ई दे आर राइटिंग दिस आई सी प्लस आई पी. After that, we can see the characteristics of the common base configuration. It is divided in two types. These are nothing but input characteristics and the output characteristics. Input characteristics means what? The graph of input voltage with respect to the input current. And output characteristics, output voltage with respect to the output current. So can anyone tell me in ये जो diagram है NPN का, here which is the input current and which is the input voltage? Can anyone tell me? You can take this as VEE or you can take this as VBE. तुम नाम यहाँ पे कुछ भी दो, no matter. हाँ, so can anyone tell me यहाँ पे input current क्या है और input voltage क्या है for the NPN? If you want additional mark in the term work, you are supposed to answer the question. Input current IE. Very good. Input voltage? VEE. 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 That is nothing but we can say as a base और emitter के बीच का current. So you can say that will be the VBE or VEE which we are taking on the x-axis. And IE that is nothing but the input current. जैसे तुमने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड के जो ग्राफ ड्रॉ किया है एग्जैक्टली सेम यू कैन सी हियर, वैसा ही सेम है. दैट टाइम ऑल्सो वी वेयर सेइंग करंट का वैल्यू कम होता है, वी वेयर राइटिंग देयर मिली एम्पियर. यहाँ पे भी तुमको मिली एम्पियर ड्रॉ करना है, लिखना है. Only here we are taking the different value of VCB to check how the input characteristics are related with VCB. And if you see, the value of output current is almost independent of on VCB. It is only depend on the input voltage, that is nothing but a VBE. So you can say whenever we are giving VBE input voltage to the emitter base diode, at that time for some time there will be no current, but when the value of VBE will reaches in between 0.3 to 0.7, that is nothing but barrier potential or the cut-in voltage. At that time the value of IE current increases rapidly with increase in the input voltage. Here the value of resistance is very small because current का value बढ़ रहा है. Now we will see the output characteristics. अब वहाँ पे output characteristics डायोड के जो थे थर्ड क्वाड्रेंट में, but here you will get output characteristics also in the first quadrant, and these characteristics are divided in these three regions जो हमने यहाँ पे regions पढ़े थे. Transistor operating mode, this region you will get in the output characteristics of transistor. So you can say output characteristics, it is the graph of output current with respect to the output voltage. Output voltage VCB, output current IC, its value will be also less, so you can take as a milliampere. Whenever we are giving the output voltage VCB, at that time the value of current going to increase, you can see here, and it is remaining almost constant. जैसे तुमने रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन के बाद कांस्टेंट रहता था. इफ़ यू सी यहाँ पे नियर अबाउट IE का वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, लाइक दैट फॉर दिस यू आर गेटिंग IE इज 7 मिली एम्पियर. So here you are getting almost the value of IC is constant with respect to the VCB. So we can say these as the output characteristics, and the value of output current varies linearly with output voltage, but only when VBC is very small. And as the VBC is increasing, यहाँ पे देखो थोड़ा सा
बढ़ रहा है वोल्टेज के साथ, -1 से 0 तक. इफ यू सी हियर, with increase in VCB the value of current is going to increase, but when the value of VBC is increasing, at that time you will get constant output emitter current. This is the output characteristics, and output characteristics is divided in 3 regions. These are nothing but cutoff, saturation and active region. Cutoff means ये जो जीरो के यहाँ का रीजन होता है, ये 1 मिली एम्पियर से नीचे का. एक्चुअली इन द डायग्राम दे आर शोइंग बिलो द जीरो, बट ये जीरो के नीचे भी और थोड़ा जीरो के ऊपर भी, लोअर देन द 1 मिली एम्पियर. दैट ऑल वी आर सपोज टू से एज अ कट ऑफ. वाई? बिकॉज देयर both base emitter diode as well as base collector diode will behave as a reverse bias. So you will not get any amount of current there. So there you can take transistor as a off switch. That's why we are saying this as a cutoff region. If you will move to this region, ये यहाँ से यहाँ तक का देखोगे region, that there both base emitter diode as well as base collector diode both will work as a forward bias. So that's why we can use here transistor as a on switch. But from this region to this, a cut off और इसके दोनों बीच का पूरा region, that is nothing but a active, where we are doing our working. ये जो हम पूरा वर्किंग ऐसे जो कर रहे हैं, that is nothing but a, here we are making VBE as this emitter diode as a forward and this collector base diode as a reverse. That is nothing but a amplifier. So we can say here this whole area is active region, where you will get value of current is almost constant with respect to the increase in VBC. मतलब आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, VCB वी आर इंक्रीजिंग, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट इज गोइंग टू रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. दैट इज नथिंग बट अ एक्टिव रीजन. हियर ऑल्सो वी आर सपोज टू सी द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस. इनपुट रेजिस्टेंस मतलब व्हाट? द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट करंट. इनपुट वोल्टेज था VBE, इनपुट करंट था IE. चेंज इन वी आर टेकिंग द ट्रायंगल सिंबल और वी आर टेकिंग द डेल्टा. Output, the ratio of change in output base to collector voltage with respect to change in input current, that is nothing but a collector current. क्योंकि output current जो था, that is we are saying as a collector. So that will be as a output resistance. Now we can see here the common emitter configuration. Difference क्या है? सिर्फ ये जो तुम्हारा ट्रांजिस्टर था, इसको रोटेट करना है. ये जो इमीटर है हमें कॉमन लाना है, तो हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे कि हम इमीटर को दोनों तरफ कनेक्शन दे सकेंगे. इफ हॉरिजेंटल की जगह इफ आई एम पुटिंग वर्टिकली लाइक दिस ट्रांजिस्टर, इमीटर वी आर सपोज टू गिव एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट. दैट इज वी आर सेइंग एज अ कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन. दिस इज फॉर NPN. सेकेंड वन एज फॉर PNP. कनेक्शंस बाकी बैटरी में कोई भी चेंज नहीं है. सिर्फ डिफरेंस क्या है? हमें इमीटर को अभी कॉमन करना है, PNP रहो या फिर NPN रहो. सो दिस इज द कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन. हियर इमीटर विल बी द कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. तो अब चेंज हो गया है. यहाँ पे इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग था. यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है? वहाँ पे भी VBE था, यहाँ पे भी VBE है. बट यहाँ पे वहाँ पे इनपुट करंट क्या था? IE. और यहाँ पे इनपुट करंट क्या है? IB. बिकॉज IE इज कॉमन, तो यहाँ पे इनपुट करंट क्या है? IB. यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है तुम्हारे पास? VCE. वहाँ पे क्या था? VCB. आउटपुट करंट वहाँ पे क्या था तुम्हारा? IC. यहाँ पे भी यू कैन सी आउटपुट करंट इज नथिंग बट IC. So you can see, if you are getting the amplification factor in the common emitter configuration, that we will say as a beta.
and that will also the same definition. Output current, change in output current with respect to the change in input current. आउटपुट करंट हमारे पास वहाँ पे भी IC था, यहाँ पे भी IC है, बट वहाँ पे इनपुट करंट था IE, यहाँ पे इनपुट करंट है IB. So you will write beta equal to delta IC upon delta IB. And here the value of beta will be always greater than 20. It will be in between 20 to 500. So you should know this formula, you should know these values. After that you will get the equations which will give the relationship between alpha and beta. अल्फा क्या था? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE. बीटा क्या है? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB. IE क्या था हमारे पास? IB प्लस IC. So from that we can write change in emitter current with equal to change in base current plus change in collector current. If you rearrange that equation, you will get the relation between alpha and beta. You will get beta equal to alpha upon 1 minus alpha. They can ask the question or they can ask this relationship between alpha and beta. You should know. Now we can see common collector configuration. यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है क्या कॉमन कलेक्टर का? हाँ, दे हैव गिवन. ओके, बिफोर दैट दे हाँ. सो सी हियर, just now we have seen the output current, that is nothing but IC. So that we are getting as alpha IE plus ICBO. वहाँ पे क्या था हमारे पास? वहाँ पे था सेम. यू आर गेटिंग IC इक्वल टू अल्फा IE बिकॉज अल्फा हम क्या बोल रहे थे? चेंज इन आउटपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट current, but also at that time you will get there some leakage current. If you will solve this, you will get IE equal to beta plus 1 into IB plus beta plus 1 into ICBO. If you are getting this point, okay. Otherwise ये यहाँ तक का समझ रहा है? These things are very simple. You can remember. You can see these things. ये इक्वेशंस तुम एक लिख के देखोगे तो तुमको समझ आ जाएंगे, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी सिंपल. ओनली बहुत मतलब अल्फ़ा का अलग है, बीटा का अलग है, IE, IB, IC थोड़े नाम ज़्यादा है. आफ्टर दैट डायरेक्टली वी कैन सी द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ फॉर द कॉमन इमीटर. सेम वहाँ पे जैसा ग्राफ मिला था वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही मिलेगा, बट वहाँ पे इनपुट करंट क्या था? वहाँ पे था इनपुट करंट IE, यहाँ पे इनपुट करंट है IB. एंड ऑलरेडी वी आर सेइंग बेस जो होता है इट विल बी द थीम. सो यू विल गेट देयर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. वहाँ पे हम मिली एम्पियर लिख रहे थे, यहाँ पे हम लिखेंगे माइक्रो एम्पियर. इनपुट वोल्टेज वहाँ पे भी VBE था, यहाँ पे भी VBE है. सेम, दिस इज द इनपुट characteristics. Here the value of IB increases with respect to the VBE and it is almost independent on VCE. वहाँ पे हम बोल रहे थे almost independent on VCB क्योंकि VCB आउटपुट वोल्टेज था, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है VCE. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तुमने यहाँ पे ये बड़ा उसके बाद ये छोटा ड्रॉ किया है. अदरवाइज इफ यू आर ड्रॉइंग यही डायग्राम देन ऑल्सो यू विल गेट द मार्क. ओनली व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है हियर यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ IC, बिकॉज ऑफ कलेक्टर रीजन, बट यहाँ पे जो है वो बेस की वजह से मिल रहा है और बेस जो होता है बहुत थीन होता है. दैट्स वाई दिस वैल्यूज आर वेरी स्मॉल. अब देखो यहाँ पे डायग्राम में मिस्टेक किया है, यहाँ पे दे हैव रिटन मिली एम्पियर बट यू शुड रिक्वायर माइक्रो एम्पियर. ऑल वैल्यूज दे हैव गिवन इन द माइक्रो बट ओवर they have written the milliampere. You should write there microampere. So we can say it is the graph of output collector current with respect to the output voltage VCE. The value of IC varies linearly with VCE when there is a very small output VCE voltage. But when VCE output voltage will going to increase, at that time the value of IC output current will remains almost constant, and that whole region we are saying as active. This region we are saying as a cutoff. This region we are saying as a saturation. So here we have seen about the common
emitter region. Now we are supposed to see common collector. Before that we will see about the common emitter configuration, input and output resistance. The same definition, only the ratio of input base to emitter voltage with respect to input base current, that we will say as a input resistance. And output, the ratio of output voltage, that is nothing but VCE with respect to output current. क्या है हमारा, वहाँ पे भी IC था, यहाँ पे भी IC है, with respect to IC, change in IC, that will give us the output resistance. Now you can see the common collector, same diagram है. What is the difference? वहाँ पे सिर्फ emitter नीचे था, यहाँ पे emitter को हमने ऊपर किया है. This is the base. So which will be the input voltage, which will be the input current, and which will be the output voltage and output current, you guys are supposed to tell me. After that I will tell the remaining thing. Tell me, यहाँ पे देखो ये है base, ये है emitter, ये है collector. Now tell me which is the input voltage. Is there anyone? You guys are supposed to answer. So please answer. See here, if it is a collector and it is the base, obviously CB will be the input voltage. ये जो voltage रहेगा इसको नाम क्या देंगे हम, VCB. This is the collector, this is the emitter. Output यहाँ पे है तो हम क्या बोलेंगे, CE is the output voltage. इनपुट जो है यहाँ से जा रहा है, सो IB विल बी द इनपुट करंट. आउटपुट जो है, कलेक्टर तो कॉमन है तो कलेक्टर नहीं कंसिडर करेंगे. आउटपुट कहाँ से मिलेगा हमें, इमिटर से. सो दैट्स व्हाई यू कैन से IE विल बी द आउटपुट करंट. So you can see here that we are saying as a current amplification factor, which we are denoting by letter gamma, which will be the change in output current, that is IE with respect to output current क्या है, IE with respect to input current, that is the IB. So that is we are saying as a common collector configuration. This circuit will give us the gain which will be like IE equal to IC, because base will be thin, so its value, base current, we can take as a 0, and approximately delta IE you can take as a delta IC. This is the gamma. Now they can ask you, you are supposed to derive the relationship between alpha, beta and the gamma. अल्फा का क्या मिला था हमें, 1 plus alpha. See here, because we were writing beta equal to IC upon IB and alpha equal to IC upon IE, and third one we are writing IE equal to IB plus IC. ये तीन इक्वेशन यदि समझ जाए ना, और फोर्थ वन गामा वाला, यू विल गेट ऑल दिस इक्वेशन. तुम्हें ये बीटा गामा के अल्फा के साथ रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए सिर्फ ये तीन इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट गामा वाला, that is nothing but IE upon IB, delta IB, delta IE upon delta IB. From this equation you will get all these relations, अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा. तो बीटा हमें क्या मिला था, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, एंड इफ यू विल फाइंड गामा, वो था अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, and gamma will be 1 upon 1 minus alpha, because we are writing alpha equal to IC upon IE, we are writing IE equal to IB plus IC, and we are writing gamma equal to IE upon IB. From these three equations you will get the relationship between gamma and the alpha. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. So here we have seen common base, common emitter and the common collector configuration. Common base होता है, that current amplification factor we will denote by letter alpha. Common collector we will denote by letter gamma, and the common emitter we will denote by letter beta. So you will get beta equal to alpha upon 1 minus alpha, and gamma equal to 1 upon 1 minus alpha. Gamma equal to 1 upon 1 minus alpha. There are some differences between common emitter, common
base and the common collector configuration. The input resistance for common base will be low, that will be about 100 ohm. For common emitter it will be about 750, and very high resistance you will get in the common collector. The current gain factor will be less than 1 in the common case. It will be 20 to 500 for the common emitter, and it will be higher, means greater than 500 in the common collector. After that, applications for common base for high frequency application. Common emitter you can use for the audio frequency applications, and common collector we can use for the impedance matching. Voltage gain, its value about 150. Common emitter voltage gain will be about 500, and for the common collector voltage gain value will be the less than 1. Output resistance exactly vice versa with respect to the input. So here we have finished the comparison of the different configuration of the transistor. Remaining things we will see in the next class. If anyone is having any query, you can ask me. Otherwise, in tomorrow's session we will see transistor as amplifier, transistor as switch, and then we will move to the MOSFET. फिर हम MOSFET start करेंगे. Okay, so we can stop here.